everyone, welcome back to my channel. So for today's video I have got you some very pretty amazing outfits for Diwali, and this time it is from your basic wardrobe collection. So without further ado, we should get into the video. I was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my smile. So the first outfit is Anarkali, and Anarkalis are very good for Diwali functions. मतलब काफ़ी इंडियन वेयर में आता है and it looks very elegant and stylish. So जो मेरा अनारकली है, दिस इज़ अ DIY अगेन, एंड ये मैंने कपड़ा लिया था फ्रॉम लाजपत नगर. मतलब जो ऊपर नेट लगा है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम लाजपत नगर, एंड नीचे जो वो पीच सा घेरा है अनारकली का, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम लाजपत नगर. तो ये जो ब्लैक वाला कपड़ा है ना, दिस वॉज अ लिटिल एक्सपेंसिव. इट वॉज फॉर 750 रुपीज़ मीटर. एंड ये जो नीचे जॉर्जेट का कपड़ा है, दिस वॉज अराउंड 100 और 120 रुपीज़ मीटर. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, पर इसी ब्रैकेट के बीच में था. जो दुपट्टा है वो मैंने रेडीमेड लिया था, पर उसको मैंने डाई करवाया, आधा पीच एंड आधा ब्लैक. सो दिस इज हाउ आई मेड दिस अनारकली. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time. The second look that I created, and it is a very pretty brocade kurta with the salwar. ब्रोकेड जो कपड़ा है ना, दैट इज़ वेरी रिच. ये आपको बहुत ही अच्छा फेस्टिव लुक देता है विथ सच अ क्लास एंड एलिगेंस. तो ब्रोकेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन योर वार्डरोब, क्योंकि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो यू कैन जस्ट वेयर अ नाइस ब्रोकेड कुर्ता और अ ब्रोकेड स्कर्ट. तो ब्रोकेड इज़ अ मस्ट इन योर वार्डरोब. सो जो मैंने इसमें किया है, आई वोर अ ब्रोकेड ग्रीन कुर्ता विद अ ब्लैक सलवार, क्योंकि ऊपर बहुत हैवी हो गए थे, तो आई वॉन्टेड नीचे अ प्लेन बेसिक कलर. सो आई मैच्ड इट दिस वे. सो दिस इज हाउ आई मेड माई सेकेंड लुक. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story. थर्ड आउटफिट दैट आई क्रिएटेड, एंड इट इज़ वेरी प्रिटी. मतलब ऐसे वाइट बेसिक कुर्ते एंड शराराज या ट्राउजर्स, प्लाजोज, ये आप सबके पास होंगे ही. सो आई थॉट इट इज़ अ नाइस लुक टू क्रिएट. मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक वाइट कुर्ती पहनी विद अ वाइट शरारा, बट उसमें मैंने एक बहुत प्यारा कलर ऐड किया, दैट इज़ ब्लू विद अ बांधनी दुपट्टा. उसमें छोटे छोटे ऐसे वाइट डॉट्स भी हैं विच गोज़ वेरी वेल विद द होल सेट. तो ऐसे आप कोई भी कलर का अच्छा दुपट्टा ऐड कर सकते हो. मैंने ब्लू किया, पर आप कोई भी कलर का ऐड कर सकते हो, तो वो आपके आउटफिट को बहुत ही अच्छा बना देगा. सो फॉर द कुर्ता मैंने इसका मटेरियल लाजपत से ही लिया एंड इसको स्टिच करवाया. शरारा मेरे पास रेडीमेड था, एंड दुपट्टा भी आपको लाजपत नगर से मिल जाएगा. दिस इज़ माई फोर्थ आउटफिट दैट आई क्रिएटेड, एंड इस पर जो सारा काम हुआ है ना, दैट इज़ गोटा पत्ती वर्क विच इज़ इन ट्रेंड अ लॉट दीज डेज. तो मैंने ये जो कपड़ा है, ये मैंने लिया था चांदनी चौक से, बट आपको ये ऐसा सूट मटेरियल अब लाजपत नगर, सरोजनी, सब जगह मिलेगा, बट उस टाइम ये न्यू आया था, तो मैंने चांदनी चौक से लिया था.
सो दिस इज़ वेरी नाइस टू कैरी एंड इसका जो पिंक कलर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी. सो मैंने क्या किया, मैंने इसको स्टिच करवाया विद अ वेरी हाई स्लिट एंड मैंने इसके नीचे ट्राउजर्स मतलब पैंट्स बनवाई क्योंकि इसका बहुत हैवी दुपट्टा था. तो आई वॉन्ट कि नीचे ज़्यादा शरारा या घेरा ये सब ना हो. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times. दिस इज़ द फाइनल लुक दैट आई क्रिएटेड एंड ये ना एक बहुत ही बेसिक कुर्ते से है, बट जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है और जो इस पर डिज़ाइन ऑलरेडी इम्प्रिंटेड है दैट मेक्स इट वेरी नाइस फॉर फेस्टिव लुक्स टू. तो जिसका कलर कॉम्बिनेशन है दैट इज़ ब्लू एंड पिंक एंड आई गॉट इट फ्रॉम पैंथलून्स फ्रॉम अ ब्रांड नोन एज रंगमंच. और इसके साथ जो मैंने चूड़ीदार है आई गॉट इट रेडीमेड, दुपट्टा ऑल्सो आई गॉट रेडीमेड. तो मैंने इसका लुक कंप्लीट किया विद अ नाइस दुपट्टा जो पिंक कलर का था विद नाइस गोल्डन ऐसे लाइन में वर्क कर रखा था which made it a very nice festive glam look. So this was it for this video. I really hope you liked it. If you did, please give it a big thumbs up, subscribe to my channel, and until next video, bye.